Hello student, welcome to the session on Turing Machine. As we have already seen, four classes of languages defined by Chomsky hierarchy, out of which regular language is accepted by finite state machine. Now what is finite state machine? We already know. The input string is stored on a tape. One by one symbol is processed. There is no memory. Now addition to finite state automata, a stack which gives us push down automata. So push down automata has two parts, the input string stored on a tape and a stack which gives a memory to that particular push down automata. Finite state automata which remembers only its current state and push down automata can access only the symbol which is present on the top. These two models involve severe restrictions on either amount of memory or the way the memory is accessed. So we are moving now the third machine, that is Turing machine, which accept recursive enumerable language defined by unrestricted grammar. So Turing machine is discovered by Alan Turing in 1936. Listen carefully. So Alan Turing began by considering a human computer. Now what is human computer? Human who is solving some problems algorithmically using pencil and paper. बच्चों, जब आप पेंसिल और पेपर से कोई भी एल्गोरिदम सॉल्व करते हो, डेटा स्ट्रक्चर का ही ले लो, आप क्या करते हो, एक पेपर की साइड पे जो इनपुट दिया है वो लिखते हो, वन बाय वन वो इनपुट के सिंबल प्रोसेस करते जाते हो, जो चेंजेस आते हैं वो राइट साइड में लिखते हो, बाद में आके ओरिजिनल सिंबल में चेंज कर जाते हो. So Turing uses the same concept to design a Turing machine. Now here instead of paper there is a tape. क्या आया पहला फैक्टर? Tape. Now what is tape? Tape is an infinite sequence of symbol. Infinite sequence of symbol. Tape is divided or mark off into square, each of one hold a single symbol at a time. Those cell, or if the square has no symbol, it contain a special symbol that is blank, denoted by this particular sign. So tape is an infinite sequence of symbol. Tape has a left hand and it increases to the right side with infinite in nature. Now tape has one more content, that is a head. Now what is head? Head represent the current position or where the current control is present. So Turing machine consists of two things, tape and head. Tape on which input string is stored, and in the remaining square blank symbol is there, and head represent the current position or where the current control it position to the particular cell on the tape. Four operations are possible on the tape. Tape is very important factor or a data structure in Turing machine. Now which are those operations? We will see one by one. So first, read or scan symbol below the tape head. मीन्स वो सिंबल जो भी हेड के नीचे है वो रीड या स्कैन कर सकता है. दूसरा ऑपरेशन, अपडेट और राइट अ सिंबल बिलो द tape head.
Now important, move the tape head one step to the left. Move the tape head one step to the left, one step only. Or fourth operation possible on tape with tape head is move the tape head one step right. इससे क्या क्या पता चला हमें? The head is associated with a tape. Tape head is an infinite sequence of symbol. Head can move at a time only one cell, either to the left or to the right. Head एक बार एक ही सेल में या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में मूव करेगा. So these four operations are possible on tape. Student, listen one thing carefully. Tape is act as input device. The input is simply a string assumed to be finite of non-blank symbol on the tape originally. Tape is also act as memory, and the same tape is act as a output device. यहाँ पे टेप तीन काम करता है. इनपुट के लिए जगह देता है, मतलब मेमोरी देता है, and after the operations on a particular input, whatever the output or change in the input is stored on the same tape. The most significant difference between the Turing machine and the simpler machine is processing a string is no longer restricted to a single left or to right pass through the input. फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता था? हम वन बाय वन एक सेल में दूसरी सेल मूव करते थे एक ही डायरेक्शन में और सिर्फ वो रीड कर सकते थे. पुश डाउन ऑटोमेटा में एक वही है, लेकिन क्या होता था, सिर्फ स्टैक में हम स्टोर कर सकते थे. लेकिन यहाँ पे जो हेड है वो रीड भी कर सकता है, उसके ऊपर राइट भी कर सकता है या इरेज भी कर सकता है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है. मतलब दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन. द मशीन, ट्यूरिंग मशीन कैन एग्जामिन पार्ट ऑफ इनपुट, मॉडिफाई इट, take a time out to execute some operation, some computation in a different area of a tape, return to re-examine the input and repeat any of these, and perhaps stop the processing before it has looked all the input. So ये जो है ये ट्यूरिंग मशीन और बाकी के मशीन में डिफरेंस है. और एक डिफरेंस है क्या, वो हम देखते हैं. अब हमने पुश डाउन ऑटोमेटा और फाइनाइट ऑटोमेटा में देखा, वहाँ पे क्या होता था, एक्सेप्टिंग स्टेट होती थी, एक होते थे या मोर देन वन होते थे. जब भी स्ट्रिंग प्रोसेस करने के बाद अगर एक्सेप्टिंग स्टेट में आके रुके तो क्या बोलते थे, स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो स्टेट है, उसको बोलते हैं फाइनल. कौन कौन सी दो फाइनल स्टेट है? एक है एक्सेप्टेंस और दूसरी है रिजेक्शन या रिजेक्ट. एक्सेप्टेंस लेकिन अकेले नहीं आती, एक्सेप्टेंस एंड हॉल्ट आता है, वो रिप्रेजेंट होता है ऐसे से. रिजेक्ट एंड हॉल्ट आता है, वो रिप्रेजेंट होता है HR से. Acceptance and halt means after reaching at acceptance state, the machine cannot process next. मशीन वहीं पे आके रुकती है, इसलिए यहाँ पे हॉल्ट आता है. मशीन हॉल्ट एट दैट स्टेट, प्रोसेसिंग इज नॉट पॉसिबल आफ्टरवर्ड्स. एंड रिजेक्ट एंड हॉल्ट में क्या होता है, जब मशीन रिजेक्ट स्टेट में आती है मतलब स्ट्रिंग रिजेक्ट होती है, एंड हॉल्ट मीन्स मशीन स्टॉप इट्स वर्किंग और एग्जीक्यूशन एट दैट स्टेट. तो HA and HR are the two final state. One is acceptance and one is reject. Now we will see in the next video the definition of a Turing machine.